गर्व होता है कि मेरी वाइफ मेरे से भी आगे जा रही है। इससे बड़ा उदाहरण कोई शक्ति का या प्रबलता का कहीं और दिखाई नहीं देता। गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का आगमन होगा। महामहिम श्री इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के 5वें गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति हैं। उन्होंने देश को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया है, युवा नेतृत्व जिसने हर क्षेत्र में आशातीत विकास किया है, जन भागीदारी सुनिश्चित की है और सबसे खास बात भारत और फ्रांस के जो आपसी संबंध हैं विश्व बंधुत्व पर आधारित हैं। सामरिक साझेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 1977 में जन्मे हैं श्री इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस को एक अनुकरणीय नेतृत्व देने का सक्षम प्रयास करते नजर आते हैं। Friends, this year we are celebrating the 25th anniversary of the India-France strategic partnership. As was mentioned, India and France enjoy a special bond, and as strategic partners we share a high degree of convergence on a range of regional and global issues. Some of you may recall that in July 2023, Prime Minister Modi was the guest of honor at the Bastille Day parade held in Paris. आपने देखा इंसिडेंटली वो भी एक महिला है। मैंने उनसे बात की। कर्नल लॉर्ड मिशेल फाइटर पायलट है, मिराज उड़ाती है। उनके पिता भी फाइटर पायलट है और उनका ये कहना है कि हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उन्हें गर्व है कि भारत में भी चाहे घटी हो या कुछ समय तक रफाल लड़ाकू विमान हो, महिला रही थी। और हिमाचल चोपड़ा महिलाओं की अगर बात करें तो अग्निवीर स्कीम में भी 1700 महिलाएं अब तक पास आउट हो चुकी है, 55,000 पुरुष पास आउट हो चुके हैं। और ये एक्सपेरिमेंट जो था, क्या ये सफल माना जाए? देखिए, आज एक पूरा दस्ता है अग्निवीर, तीनों सर्विसेज के अग्निवीर, वायु, थल सेना और नौ सेना की अग्निवीर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेपरेट दस्ते में। हर दस्ते के अंदर अलग हैं विमेन। जैसे इस बार आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की एक दस्ता है जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेज ऑल फीमेल दस्ता है। तो देखिए, हर तरह से मैंने जैसे बताया इंडियन एयरफोर्स के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ विमेन ऑफिसर्स हैं, 17-18% के करीब हैं। हर आर्म में महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक जमाने में सिर्फ डॉक्टर होती थी और आज वो फाइटर पायलट, जैसे आपने बताया, वो फाइटर पायलट हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं। तो विमेन हैव कम इनटू ऑल एस्पेक्ट्स। सब चीजों के अंदर अब विमेन पूरी तरह से जुड़ गई हैं। शुरू में आपने गुंजन एक पिक्चर देखी थी, उसके अंदर बहुत अच्छी फोटोग्राफी दिखाई। एक हेलीकॉप्टर पायलट थी गुंजन, तो मतलब उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, टॉयलेट्स की सेपरेट टॉयलेट्स बनाने की, सब चीजें सेट हो चुकी हैं, सेटल हो गई हैं। आर्म फोर्सेज में विमेन के लिए सारी फैसिलिटीज कर दी हैं सो दैट दे कैन बी वेरी अच्छे कॉम्पिटेंट बन सके। एंड द विमेन आर एब्सोल्युटली पार्ट ऑफ द आर्म फोर्सेज टोटली। यस, बस अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर आपको जाते हुए दिखेंगे। जो हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो वहां पर उनका स्वागत करने के लिए साथ में रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें। उत्साह दर्शक दीर्घा में भी जबरदस्त है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन प्रतीक्षा किसकी हो रही है इस समय? जिस तरह से भारत की आप सैन्य शक्ति देखेंगे, जिस तरह भारत की सामरिक क्षमता देखेंगे और जिस तरह से आप भारत की सांस्कृतिक विरासत देखेंगे, ये तीनों चीजें मिलकर इस गणतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। भारत वो यात्रा जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता से और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनकर जो परंपरा शुरू हुई, वो सांस्कृतिक विरासत जो 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता की है, ये बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है। एक तस्वीर आप असम की भी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा नेशनल कैडेट कोर के छात्र छात्राओं को
प्रशस्ति पत्र और मेडल राज्यपाल वहां पर सौंप रहे हैं। और ये मनोबल एडमिरल सिन्हा बहुत ज्यादा छात्र छात्राओं का बढ़ाता है। ये मेडल आजीवन उनके घरों में बहुत गर्व से दिखते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है गौरव, ये कोई भी नेता जो कि ऐसे पद पर बैठे हैं जिनसे रोज मिलना संभव नहीं है और उनसे आपकी मुलाकात हो उस उम्र में। Later in September, President Macron was our honored guest for the Leaders Summit in India for the G20. In fact, many agencies and ceremonial protocol all get context for this celebration, anchoring the present in a stability that was weathered many storms. सिग्नल 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट जो कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक तक कई किलोमीटर के क्षेत्र में संचार और ध्वनि का जिम्मा संभाले हैं, जिसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम और स्पीकर्स बहुत महत्वपूर्ण यहां मौजूद दर्शकों के लिए। In fact, the exceptional quality of sound that you can hear that covers Kartavya Path has been arranged by the 1 Army Headquarters Signal Regiment under the command of Colonel Rajkumar Mishra. माननीय राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रगान के समय 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार के नेतृत्व में दी जाएगी। गन पोजीशन ऑफिसर हैं सूबेदार अनूप सिंह। शुभ कार्य से पहले अनुष्ठान भी पूरे किए जाते हैं और जिन तोपों से ये सलामी दी जाएगी उनका निर्माण भारत में ही किया गया है। In fact, a lot of preparation, training, and rehearsals go into ensuring that everything works like clockwork. It's a proud moment for every soldier, every participant here to take part in this parade. And right across our commentator's booth is the Parade Control Center, where every movement, the music, the coming on of the music and the fading out, everything is going to be controlled here from the Parade Control Center. कई एजेंसियां मिलकर पूरे समन्वय के साथ काम करती हैं और फिर इस विशाल और भव्य समारोह का खूबसूरत आयोजन होता है। इधर दूरदर्शन ने आप तक उत्तम प्रसारण पहुंचाने के लिए कैसे कैसे इंतजाम किए हैं, आइए देखते हैं। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के सजीव एवं सुचारू प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। आज नेवी खड़ी होकर बोलती कि हमने अपने सबमरीन बना रहे हैं या अपने फ्रिगेट बना रहे हैं, तो 10 साल डाउन द लाइन ये एक कर्तव्य हमारा बन गया है, एक रास्ता हमारे खुल गया है कि आगे चल के हम क्या करने वाले हैं। और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है कि बनाने वाले तो हमारे देशवासी हैं ना, तो अगर हमारा प्रोडक्शन बनेगा तो हमारे देशवासियों को फायदा होगा, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर वो जीरो एरर सिंड्रोम में जीरो एरर मास्टर चोपड़ा हमारे देशवासियों को इंश्योर करना ही होगा, उसमें लचरता बिल्कुल संभव नहीं। क्या गौरव, मैं एविएशन के बारे में बताता हूँ। देखिए, आज फाइटर जहाज बनाने LCA एक वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट, और LCA में हमने सारी टेक्नोलॉजी अदर देन एरो इंजन मास्टर कर ली है। मिसाइल्स हमारी हैं, रेडार हमारा है, सारे सिस्टम हमारे हैं, इंडिजिनस है, एवियोनिक्स हमारी है। तो इसलिए हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का कैपेबिलिटी सेट है, ओनली प्रोडक्शन बढ़ा दिए। हेलीकॉप्टर 400
बढ़ाने का इज गेटिंग इनटू प्लेस। हमारे रेडार्स, हमारी मिसाइल्स कैपेबिलिटीज, वी आर मेकिंग ब्रह्मोस, हम एयर टू एयर मिसाइल चला रहे हैं, ग्राउंड टू एयर मिसाइल। तो हर इलाके में हमारा इकोसिस्टम है। वी आर सिटिंग ऑन अ लॉन्च पैड, बिल्कुल उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक्सपोर्ट्स का ग्रेट पोटेंशियल है। एक हाई लेवल का टारगेट हमने डिफेंस प्रोडक्शन को दिया है। एक्सपोर्ट के लिए भी टारगेट $5 बिलियन का बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। 2025 में हमारा वो टारगेट रहेगा। इसलिए हमारा जो इकोसिस्टम है वो फाइनली इट इज गेटिंग इन प्लेस। और ये बात दुनिया देख भी रही है, दुनिया देख रही है श्वेता ये बात, और इसीलिए दुनिया हमारे जश्न का हिस्सा भी बन रही है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। राष्ट्रपति भवन। elaborate arrangements made by Doordarshan to Kartavya path. We're now at the National War Memorial that was unveiled in 2019, set up in honor of the martyrs who have displayed acts of valor during wartime. The names of 26,000 soldiers who've made the ultimate sacrifice of their lives in the defense of the nation. It has 4 concentric circles and a central obelisk under which burns the Amar Jyot, representing the immortal soldier. The circles are designed as Chakravyu, an ancient Indian war formation. The start of the parade actually begins here when the Prime Minister arrives and is received by the Defence Minister and other officials along with the 3 service chiefs. After being introduced, he is led inside where he places a wreath of remembrance on behalf of the nation. The National War Memorial, representing the gratitude of a nation to its armed forces. This memorial strengthens the sense of belonging, high moral values, sacrifice and national pride in our citizens. राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कुछ ही समय के बाद यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और वे कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक पर 4 चक्र बनाए गए हैं जिसमें आजादी के बाद भारतीय सेना की भागीदारी वाले 6 युद्धक अभियानों की भी जानकारी दी गई है। अमर चक्र पर 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है। परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 अमर बलिदानियों को विशेष सम्मान दिया गया है राष्ट्रीय समर स्मारक पर और सभी परमवीर चक्र विजेताओं की यहाँ कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। देश आज उन्हें नमन कर रहा है। The monument, spread over 40 acres in the heart of the capital city, hallowed grounds where lie enshrined the souls of our soldiers. The Prime Minister paying a solemn homage on behalf of a grateful nation. And you saw those shots taken by the special positioned cameras of Doordarshan, some atop India Gate, as it looks onto the National War Memorial. And there you can see the obelisk with the eternal flame. Very
solemnly dressed for the occasion. And here at the National War Memorial, there is an inter-services guard comprising 1 officer and 21 inner guards, 7 from each service, along with 6 buglers, 2 from each service, under the command of Major Indrajit Sachin. In fact, when the Prime Minister will arrive here, this guard is in attendance for the wreath-laying ceremony. And here to welcome the Prime Minister here, we have the Prime Minister's carcade going down Kartavya path. And standing there ready to receive him, we have the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt, Chief of Army Staff General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff Admiral Radhakrishnan Harikumar, and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary. इंडिया गेट और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बीच स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक। इसे सन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अमर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ होती है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनका आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर। आज के भारत का एक और तीर्थ है राष्ट्रीय समर स्मारक। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। श्रद्धा और गौरव इन भावों का संगम है। राष्ट्रीय समर स्मारक प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह समर स्मारक पर आगमन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। Bestowing tribute, they say, is practiced not so much in words as in action, honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication and valor is paying tribute in its finest form. Death may not be a choice, but sacrificing one's life for the country definitely is, and that's why it deserves our deepest gratitude. The Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the immortal soldier by laying a wreath at the memorial. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life, a circle with no beginning and no end. The evergreens used in the wreath signifying everlasting life. The wreath laying will be followed by 2 minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers, those for whom the nation's safety and protection and integrity came first, always and every time. प्रधानमंत्री द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अंतर सेनागार सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं। वहाँ पर जब अपने किसी साथी को गंवाते हैं तो वो रुक नहीं सकते हैं शोक मनाने के लिए, और सेना की उसी परंपरा, उसी सोच, उसी संस्कार को स्थापित किया जाता है जब इस तरह की सेरेमोनियल चीजें होती हैं।
वहां पर भी आप सेना की उसी परंपरा को देखेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ठीक सामने आप सेना के उन जवानों को पुष्प अर्पित जो किए जाएंगे हमारे वीर गति को प्राप्त योद्धाओं को, उन्हें आगे मार्च करते हुए देख रहे हैं। सबसे पहले अंतर सेवाओं के गार्ड कमांडर सलामी शस्त्र प्रस्तुत करेंगे। हमारे ये भी निवेदन करेंगे कि जब मौन रहेंगे, हमारे वीरों को हमारी श्रद्धांजलि।
The buglers sounding the rouse, and the guard commando ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil, our hearts beating for those which now lie still. Time moves on to create a present, but in its wake it leaves behind stories, memories and heroes, some sung, but many unsung. And today, as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi, and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit, our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow-clad mountains, along our long coastline and international borders, keeping us safe and secure. The Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book, which is kept there to put down his thoughts of gratitude. अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय उनके साथ रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को। अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि है एक, तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme. Because the call a soldier answers raises no doubt, no questions, and no second thoughts. Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का मार्ग कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। Yes, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of President Draupadi Murmu, Kartavya Path will resonate with a medley of sounds, the clip-clop of hooves on the tarmac, martial music, the crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, beautiful folk music, the roar of fighter jets, and of course, repeated applause of an highly appreciative audience here. We're now at the saluting days at Kartavya Path, where we await the arrival of the Prime Minister. The first glimpse of Rashtrapati Bhavan, and you can see the presidents of India and France, Srimati Draupadi Murmu and His Excellency Emmanuel Macron, as they emerge from the Grand Darbar Hall
bedecked with the shining chandelier and velvet tapestry. Both of them being escorted by the Military Secretary, Major General Ranjit Singh Manral, and the Deputy Military Secretary, Group Captain Abhay Fansalkar. The ADCs, Major Rohit Rasgotra and Squadron Leader Saurabh Sharma, escorting the two presidents as they move to the forecourt, wherein we've got the President's bodyguard in position to give the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavya Path. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ दरबार हाल से फोरकोर्ट की ओर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर। साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगी। The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior-most regiment of the Indian Army, that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day Parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base, and we're all waiting with bated breath to see his beautiful bandhani turban with a matching cravat, his choice of
The turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Shri Giridhar Aramane. Chief of Defence Staff, Senadhyaksh, Nausenadhyaksh, Vayusenadhyaksh. As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहां पर 75वें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. और ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब वहां पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया। Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of the stately procession with the President's bodyguard bringing the two presidents in state. To be a member of this elite regiment, the men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each of the troopers is 6 feet, and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों आकर्षक बग्गी में रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की यूनिट और यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर। विशिष्ट आमंत्रित मेहमान 13,000 के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण,
विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं, वो इन दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं। Members of the diplomatic corps representing their countries and the common man and woman of India all gathered together to celebrate this fabulous ceremony. The Prime Minister and other dignitaries waiting to receive the President of India and the President of France as they arrive down Kartavya Path. खास मेहमान, खासतौर पर 75वें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है, जो मुख्य धारा है, नारी शक्ति, और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है, उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हों, चाहे वो सशस्त्र सेना बल हों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और हवा में स्वर लहरियां गूंज रही हैं, अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम, जो संकेत है माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर्तव्य पथ पर आगमन। Ananta Sukh, the endless thread textile installation displayed behind the seated spectators by the Ministry of Culture. And you can see these visually stunning saris, panels that have been mounted here, a total of 1900 saris and drapes from every corner of the country. Each panel has a QR code that when scanned gives you details about the weave and embroidery or other embellishments used on it. This is a tribute to the woman power of India, the millions of weavers who have preserved the timeless traditions and passed on the skill through generations. The installation here also includes a 150-year-old sari. You can see the President's bodyguard in symmetry moving towards the saluting base, handpicked by the President's Secretariat from mainstream armored regiments. This unit has been taking part in several peacekeeping operations as well. The President's bodyguard, Commandant Colonel Amit Birwal, and the President acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of Kartavya Path. The nation proud to be led by a woman president. Once again, as President Kartavya and President Macron will arrive at the saluting base, he will be received by the Prime Minister and then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. रिपब्लिक है ये ऐलान become और काफी समय लगा था इसी बग्गी में इरविन स्टेडियम. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime
Modi greeting President Murmu, and of course his friend, the President of France, Emmanuel Macron. A warm embrace, a handshake, an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership. The President being introduced to Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, Chief of Defence Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. President Macron making it a point to shake hands with each of our dignitary. As soon as the presidents and the Prime Minister reach their designated seats, as they climb up the short span of stairs, a 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the lion capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolour unfurled on the 75th Republic Day. प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र और 112 हमारे जो संगीतकार थे, जो ड्रमर्स और म्यूजिशियंस थे, सभी प्राचीन भारतीय यंत्र है। उसमें दुदुम्बी भी है, दुदुम्बी के साथ साथ ढोल, ताशे, नगाड़े, पखावज सब बजेंगे यहाँ पर और आप प्राचीन भारत की वो ऊर्जा तरंगे श्वेता, यही आपके मन में वो उमंग भी भर देंगे। President's bodyguard now, moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony, once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. And now it's time for the parade to begin, and of course there will be a beautiful flower offering right at the beginning, but we can see over here, for the first time, heralding the parade, a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments. The dhol and tasha of Maharashtra, the dakpu from Telangana, the dhak and dhol of West Bengal, the shank, the chenda, dolu and kunita of Karnataka, nadaswaram,
to tare and cymbals, all playing to Rag Revati of Carnatic music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटस की आवाज। दिखता हुआ ध्वज फॉर्मेशन में 4 B-17 अभिषेक शर्मा और स्क्वाड लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ